Hello everyone. Our next topic is mobile computing. So, mobile computing can be defined as a computing environment over physical mobility. That means, in previous lecture we have seen the mobility concept. Mobility means finding the distance between the physical and the virtual objects. So, in virtual objects, we consider the bits and bytes of information traveled from the one location to another location. So this is the one kind of an environment where the physical or logical factors or objects are moved from one location to another location. The user of a mobile computing environment will be able to access data, information, or other logical objects from any device in any network while on the move. We know that mobile is the one kind of a device where we can travel from one location to another location without disturbing a call, or we can use the various internet facility while traveling from one location to another. So mobile computing system allows the user to perform a task from anywhere using computing device, like public, that is nothing but the web, or a corporate, or the personal information spaces like medical record and address books. So while on the move, we prefer device will be mobile device. While back at the home, we can use the desktop computer system. So it is necessary that the communication barrier is spread over the wired and wireless media. So now, mobile workforce, holiday makers, enterprises, and rural population uses this kind of a productivity. So this is the basic information of your mobile computing. Now we go into the details of mobile computing. That is nothing but a part, or you can say that different names which are used for the mobile computing. That is, one of the name is mobile computing, where the computing environment is mobile and moves along with the users, like telephone number of a GSM. Uh, the offline or real-time computing environment will move with the user. So mobile computing, the first name is there. You can also say that it is a anywhere, anytime information. It is generic definition, that is ubiquity, where the information is available anywhere. Ubiquity means spread, uh, globally available your data. Virtual home environment VHE. VHE is defined as the environment in a foreign network that, जैसे कि एक हम जैसे घर में एक एक्सपीरियंस करते हैं कि एक होम या कॉर्पोरेट ऑफिस में हमें जैसा नेटवर्क मिलता है या फिर जैसे सर्विसेज मिलती है, उसी तरह की सर्विसेज हमें अदर लोकेशंस के ऊपर या अवे फ्रॉम होम जो है वो मिलनी चाहिए. So it is also called as the virtual home environment. And again, the next name is nomadic computing. Nomadic means you can say that restricted. Okay, one kind of nomadic and moves along with the user. It is true both local and remote services. एक restricted बोल सकते हैं वहाँ पर हम लोग nomadic का, जो स्प्रेड नहीं हो सकता. परवेसिव परवेसिव मतलब कहीं पर भी अवेलेबल होता है. परवेसिव मतलब ऑल ओवर द ग्लोबल या ऑल ओवर द नेटवर्क में ये स्प्रेड होता रहता है, जहाँ आप लोगों को ये आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन यूज the services which are present in nature, just like networks and other things. Ubiquitous computing. Ubiquitous means nobody will notice its presence, but is appearing every place computing environment, like नेटवर्क होने के अलावा भी वहाँ पर कुछ हम बोल सकते हैं कि ये अननोन पर्सन की तरह काम करता है, यूबिक्विटस नेटवर्क की तरह काम करता है. यस. अगेन, ग्लोबल सर्विस पोर्टेबिलिटी, मेकिंग अ सर्विस पोर्टेबल. पोर्टेबल का मीनिंग मतलब कहीं पर भी किसी भी लोकेशन में हम लोग इसको अवेलेबल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. We can use the globally environment. Wearable computers, that means uh, the systems which are wearable, like watches, clothes, और जो हम लोग लेके जा सकते हैं ऐसे accessories, हमारे bags वगैरह है, context free, hands free, sensors. So these are the various wearable computer systems. And this is also one kind of research discipline that is called as the cyborg.
Cyborg is nothing but the cyber organism. Yes. So these are the various name or according to their functionality, the namings are given to that mobile computing. Then what is the actual function of mobile computing? Mobile computing performs the following characteristic or it supports the following characteristic, that is user mobility. You know that very well. When a user transfer or move from one physical location to another, the same services will be provided to you. जैसे कि हम लोग लंदन में है या न्यूयॉर्क में जाते हैं या कहीं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे तो भी हमें सर्विसेज या इंटरनेट हमें मिल सकते हैं. नेटवर्क, अगर हमारा नेटवर्क ट्रांसफर होता है, यूजर शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, देन अगेन इट विल प्रोवाइड द सेम सर्विसेज. अगर किसी जीएसएम हम लोग यूज कर रहे हैं तो वही जीएसएम फंक्शनलिटी, उसी तरह की जीएसएम फंक्शनलिटी हम अदर सिटीज में भी यूज कर सकते हैं, अदर नेटवर्क. Then bearer means a transmission media. One kind of a bearer media means a transmission media. अगर हम लोग मीडिया को मूव करते हैं from one bearer to another bearer, then these services also provide the same device mobility. We are moving from one device to another device. Then again, this is called as a device mobility. If a user session should be able to move from one user agent environment to another. अगर आप लोग कोई CDMA नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो जिसमें 1x नेटवर्क है, तो अगर वो डिस्कनेक्ट होता है और कोई कार नेटवर्क के थ्रू हम लोग जाते हैं, कार में अगर हम लोग कोई एक नया नेटवर्क हमें मिलता है तो भी हम लोग उसमें ये सेशन के दौरान रिज्यूम करके यूज़ कर सकते हैं, वो सर्विसेज हम लोग गैदर कर सकते हैं. अगेन सर्विस मोबाइलिटी, अगर यूज़र कोई हमारे एक सर्विस से दूसरे सर्विसेज में ट्रांसफ़र होता है या मूव होता है तो भी हमें ये मोबिलिटी फैक्टर्स वहाँ पर कंसिडर होने चाहिए. दैट इज़ कोई मेल अगर आप लोगों को करना है या आप लोग राइटिंग मेल करते हैं जो आप लोगों के ब्राउजर्स वगैरह यूज़ होते हैं, आप लोग डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं ऑफिस में. सो होस्ट मोबिलिटी, क्लाइंट और सर्वर अगर कोई शिफ्ट होते हैं, सिस्टम अगर हमारी चेंज होती है तो वहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं होस्ट मोबिलिटी. These are the important part and most important question आप लोगों को पूछा जा सकता है. What is the functionality? What are the functionality of your mobile computing? You have to write it in a detailed manner. Again, these computing functions are distributed into following segments. एक पूरा का पूरा मोबाइल कंप्यूटिंग का जो नेटवर्क होगा या फिर एक आर्किटेक्चर है, हम लोग बोल सकते हैं कि उसको हम लोग कुछ मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे. First is the user device, that is a user which uses the number of devices like desktop computer, portable computer, laptop systems. So user with device is the one segment. Another segment is network where the different networks are placed on a different time like GSM, CDMA, I-mode, Ethernet. These are the different networks are used for the transmission or for movement of one network to another network. Again, this diagram, you can draw this diagram for your answer. See, there is a device that is your cell phone or user with a cell phone. The networks are there with having a gateways. Gateways are the devices which are convert one protocol system into another system calls. मिडलवेयर एक वन से कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क वन का नेटवर्क जहाँ से हमारा ट्रांसमिशन होने वाला है. द सर्वर एक्चुअली जहाँ से हमें सर्विसेज को ऑक्यूपाई करना है, रिसीव करना है, तो उसके लिए सर्वर होंगे. द एक्चुअल कंटेंट्स आर stored in a data server and its database system. सर्वर के पास डेटाबेस होगा, उसके अंदर ये स्टोर होगा. सो थर्ड कंपोनेंट इज गेटवे. गेटवे ट्रांसपोर्ट बियरर. एक ट्रांसमिशन के लिए हमें गेटवेज को यूज़ करना पड़ता है. हमारे वन सिस्टम कॉल्स को अनदर सिस्टम कॉल में हम लोग कन्वर्जन करने हैं तो लॉन्गर डिस्टेंसेस, इफ यू वांट टू कवर long distances, then we are to going to use the gateways. Middlewares are the separate visible nodes in the present context. Middleware handles the presentation and rendering of the content on a particular device. ये मिडलवेयर्स जो होंगे वो आपके एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं. एप्लीकेशन सर्वर्स वहाँ पर होते हैं और फिर उनको रेंडरिंग करने का या प्रेजेंट करने का काम इनका मिडलवेयर का होगा. एंड द लास्ट वन इज द कंटेंट वेयर the server which is responsible for storing the all the services required for your mobile
devices or the user are stored in a server system. So the content which are used in databases, so content can be mass market, personal or corporate content or something. So these are the various segments of your mobile computing, or you can say that the mobile computing functions